Dear students, I am going to tell you about second part of the pH measurement. So title is measurement of pH. This is part 2, and in this I am going to tell you many more things which you should know before starting to know pH of the solution you are going to use, and you are going to use a pH meter. So my first question is, what are electrochemical cells and electrolytic cell? What is the difference between them? An electrochemical cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. On the other hand, electrolytic cell is a device which converts electrical energy into chemical energy. दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे के. And for example, electrochemical cell have an anode which is negatively charged, while in electrolytic cell, anode is positive. What is a galvanic cell or voltaic cell? We use these terms when we use cells, word cell. So every term must be very clear to us. A galvanic cell or voltaic cell, named after Luigi Galvani or Alessandro Volta, respectively. It is an electrochemical cell that drives electrical energy from spontaneous redox reactions taking place within the cell. It generally consists of two different metals connected by a salt bridge, or individual half cells separated by a porous membrane. Now, next question is, explain the properties of salt bridge and its use. What is salt bridge? A salt bridge in electrochemistry is a laboratory device used to connect the oxidation and reduction half cells of a galvanic or voltaic cell, a type of electrochemical cell. It maintains electrical neutrality within the internal circuit, preventing the cell from rapidly running its reaction to equilibrium. Without the salt bridge, the solution in the anode compartment would become positively charged, and the solution in the cathode compartment will become negatively charged because of the charge imbalance. The electrode reaction would quickly come to a halt. Therefore, it helps to maintain the flow of electrons from oxidation half cell to a reduction half cell. Thus, the purpose of a salt bridge is not to move electrons from the electrolyte, rather to maintain charge balance because the electrons are moving from one half cell to other. सॉल्ट ब्रिज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करने वाले हाफ सेल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी कि उसको न्यूट्रल रखने में सहायक होता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रोलाइट से दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में मेंटेन करने से तो नहीं रोकता, बट जो उनके मूवमेंट की वजह से चार्ज का बैलेंस खत्म हो जाता है दोनों साइड में, उसको चेक करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज KCl यूज्ड? KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड. व्हाई इज KCl यूज्ड? So KCl is a salt in nature which shows that it has a cation of a strong base and anion of strong acid, and they both have no effect on pH paper, and it has a standard value which shows that its pH is 7.
विच इज अ न्यूट्रल फिगर। KCl क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वो न्यूट्रल है। वो किससे बना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। दोनों, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों फुल्ली आयनाइज्ड रहते हैं। और जब कोई सॉल्ट फुल्ली आयनाइज्ड रहता है तो उसका pH जो है 7 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। KCl कहाँ यूज होता है? KCl is used as salt bridge because it provides positive potassium ions and negative chloride ions. The salt bridge is required to maintain the neutrality in the system by providing enough negative ions equal to the positive ions during oxidation. इससे पहले जब हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे ये था कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो चार्ज इम्बैलेंस नहीं आने देता। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होते रहते हैं लेकिन चार्ज स्टेबल रहता है दोनों हाफ सेल्स में। तो वहाँ पे हमें फिर KCl यूज़ करना पड़ता है। हाउ टू मेंटेन pH मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सब तो कंपोनेंट्स हो गए जो यूज़ किए जा रहे थे और फर्स्ट पार्ट में भी कंपोनेंट्स के बारे में बात की गई थी। नाउ pH मीटर को, इस डिवाइस को कैसे मेंटेन करें? सो ऑलवेज कीप pH electrode moist. It is better to store electrode in a solution of 4 molar KCl. If 4 molar KCl is not available, use pH 4 or 7 buffer solution. Do not store electrode in distilled or deionized water. This will cause ions to leach out of the glass bulb and render electrode useless. Electrode को, जो हमारा pH मीटर के साथ सप्लाइड इलेक्ट्रोड है, जो कि दोनों हाफ सेल्स को, आजकल की डिवाइसेस, लेटेस्ट डिवाइसेस में दोनों सेल्स को एक ही कंपार्टमेंट में मेंटेन किए रहता है, उसको या तो 4 मोलर KCl में डिप करना चाहिए या स्टैंडर्ड pH 4 और 7 के बफर सोल्यूशन में मेंटेन रखना चाहिए, डिप्ड रखना चाहिए। अगर हमने डिस्टिल्ड वाटर और डीआयनाइज्ड वाटर यूज़ कर लिया तो अंदर से आयंस जो है लीच आउट हो जाएंगे और इलेक्ट्रोड यूजलेस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी मेंटेन आवर डिवाइस। नाउ व्हाट इज pH calibration? Before starting to know the pH or adjust the correct pH of the solution we are going to use, we calibrate our device. So what is pH calibration? Calibration is a measurement technology. It is the process of configuring an instrument to provide a result for a sample within an acceptable range, and metrology is the comparison of measurement values delivered by a device under test with those of a calibrated standard of known accuracy. क्या है? मेजरमेंट की टेक्नोलॉजी है कैलिब्रेशन, और इंस्ट्रूमेंट को सेट करने का एक तरीका है जो कि एक्सेप्टेबल, जो एक गिवन रेंज में आपको pH सेट करके यूज करने में हेल्पफुल होता है। The pH meter measures the difference in electrical potential between a pH electrode and a reference electrode. For pH meters to work efficiently and to be accurate, they have to be properly calibrated. The meter is accurately translating voltage measurements into pH measurements, so they usually need testing. तो ये टेस्ट किया जाता है, पहले कैलिब्रेट किया जाता है, डेफिनेट pH रेंज में वो सही pH बताए। What type of solutions are used for pH calibration? A pH calibration solution, also called pH buffers,
are high-grade buffers and are used to calibrate pH meter before each use is to get the most accurate results every time. Buffer solutions are used to calibrate pH meters because they resist changes in pH on addition of a small amount of acid or base. They are easily prepared for a given pH. They are stable for long periods of time. किन सॉल्यूशंस को पीएच कैलिब्रेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है? पीएच बफर्स कहलाते हैं वो, और वो कमर्शियली अवेलेबल टैबलेट्स के फॉर्म में होते हैं. आपको एक बॉटल मिलेगी जिसमें टैबलेट्स होंगी pH 4 की, एक बॉटल मिल सकती है 7 की, एक बॉटल मिल सकती है pH 9 और 10 की. वो वन टैबलेट इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एंड एक स्टैंडर्ड बफर तैयार हो जाता है उससे. एंड देन हम उसको स्टैंडर्ड मान के पीएच मीटर की रीडिंग को एक सेट कर लेते हैं कि ये बफर डाला है, ये सॉल्यूशन 10 का है, ये 7 का है, और तीसरा जो है वो 4 का है. अब 4 to 10 के रेंज में हम अपना अननोन सॉल्यूशन रखेंगे और उसमें हमें पीएच जो दिखेगा वो एक्यूरेट होना चाहिए. इसलिए पहले हम pH meter को कैलिब्रेट करते हैं. These buffer solutions are used to calibrate pH meters because they resist change in pH. उनका चूँकि पता है कि वो आसानी से pH चेंज को रेजिस्ट करते हैं. अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड भी हो जाता है तो pH में चेंज नहीं दिखता है. और as I told you, they are made very easily because these are commercially available as tablets, and tablets can be dissolved in a given amount of water, mostly 100 ml. It dissolves one tablet, and they are stable for long period of time. What is a pH indicator? A pH indicator is a halochromic chemical compound added in small amounts to a solution so the pH, acidity or basicity of a solution can be determined visually. अभी तक डिवाइस से मेजर कर रहे थे, अब अगर हमें विजुअली दिखाना है पीएच मीटर, पीएच इंडिकेटर डालना पड़ेगा. वो क्या है? हेलोक्रोमिक केमिकल कंपाउंड है, बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया जाता है और पीएच के साथ वो कलर वेरी करता है. पीएच वेरी होता है तो एसिडिटी और बेसिसिटी वेरी होती है, और अब कलर वेरी होगा तो विजुअली उसको देखा जा सकता है. Hence, a pH indicator is a chemical detector for hydronium ions. Actually तो हम जिसे H positive लिखते हैं, that remains in solution in the form of hydronium ion H3O plus, और हाइड्रोजन आयंस, जो हाइड्रोजन आयन दिखाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस मॉडल, वो H3O भी लिखे जा सकते हैं. मीनिंग एक ही है कि प्रोटॉन्स हैं, प्रोटोनेटेड फॉर्म है हाइड्रोजन का. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और SOP ऑफ pH मीटर. कैलिब्रेशन ऑफ pH मीटर. अब ये कैलिब्रेशन करते कैसे हैं? Rinse the electrode with deionized water and blot dry using a piece of tissue. Then place the electrode in the solution of 7 buffer. Allow the display to stabilize. Then set display to read 7 ohms. By adjusting calibration knob, remove the electrode from the buffer. जैसा कि मैंने बताया कि pH एक डेफिनेट pH का टैबलेट अवेलेबल है, उसे वाटर में डिसॉल्व करके हमने एक बफर सोल्यूशन बना लिया जिसका कि हम मान के चलते हैं बफर 7 है. उसको हम pH मीटर के इलेक्ट्रोड के नीचे रखते हैं. वो इलेक्ट्रोड जब डिप होता है और थोड़ी देर वो फ्लक्चुएट करता है तो स्टेबलाइज होने का इंतज़ार करते हैं. देन अगर रीडिंग 7 डिस्प्ले हो रही है तो ठीक है, नहीं तो हम एडजस्टिंग नॉब और बटन से उसको
7 पे एडजस्ट कर लेते हैं और फिर उसको रिमूव करके अगेन rinse and blow dry as before and put the electrodes in the buffer of either 4 or 10, whichever is near to the desired pH of the solution to be used in the experiment. एक्सपेरिमेंट में 10 pH के आसपास का सोल्यूशन यूज़ करना है या 4 pH के आसपास का सोल्यूशन यूज़ करना है, उस हिसाब से इन दोनों में से एक बफर को हम इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ करते हैं कैलिब्रेट करने के लिए, और फिर पहले की तरह रीडिंग स्टेबलाइज होने पे हम उसको टच बटन और नॉब से, डिवाइस की नॉब से हम उसको एग्जैक्ट 10 और 4 पे ले आते हैं, क्योंकि हम इनको स्टैंडर्ड बफर्स कहते हैं जो कि टैबलेट से हमने, कमर्शियली अवेलेबल टैबलेट से हमने बनाए. Allow the display to stabilize, then set the display to 4 or 10 by adjusting calibration knob. Adjust the pH of the experimental solution. Now, अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैलिब्रेटेड है, और अब हम अननोन सोल्यूशन रखेंगे और उसमें देखेंगे कि उसका अपने से pH कितना आ रहा है, और फिर उसे डिजायर्ड pH की ओर एडजस्ट कर लेंगे. Rinse and blow dry the electrode and put it in experimental solution. Allow the display to stabilize and adjust the pH of the solution by adding buffer components. इस तरह से experimental solution का हम सही pH एडजस्ट कर देंगे. The rate and outcome of chemical reactions taking place in water often depend on the acidity of the water, and it is therefore useful to know the acidity of the water, typically measured by means of pH meter. जो हम लैब में वाटर यूज़ करते हैं वो भी हमेशा 7 पे नहीं होता है, तो इसलिए उसकी एसिडिटी और अल्कलिनिटी को हम pH मीटर से मेजर कर लेते हैं. Knowledge of pH is useful. Knowledge of pH is useful or critical in many situations, including chemical laboratory analysis. pH meters are used for soil measurements in agriculture, water quality for municipal water supplies and swimming pools, environmental remediation, brewing of wine or beer, and manufacturing, healthcare, and clinical applications such as blood chemistry and many other applications. Let us see if anything is left. No, it is not. Something is not missing in our previous slide. I have explained everything. So this is all about pH meter and its calibration. Advances in instrumentation and detection have expanded the number of applications in which pH measurements can be conducted. The devices have been miniaturized, enabling direct measurement of pH inside of living cells. Living cells में direct pH measurement पता करना, वहाँ के environment का pH measure करना is now possible. In addition to measuring the pH of liquids, specially designed electrodes are available to measure the pH of semi-solid substances such as foods. These have tips suitable for piercing semi-solids, have electrode materials compatible with ingredients in food, and are resistant to clogging. तो फूड में, सॉलिड में, सेमी सॉलिड चीज़ों में भी pH मेजरमेंट की डिवाइसेस बनाई जा चुकी हैं, जो कि उन्हें क्लॉग किए हुए, उन्हें बिना बंद किए हुए pH हमें बता देती हैं. So I have seen so many references before preparing the this slide for you. I hope you will be benefited by these notes or slides. So thank you very much. This is all for today.